Hello student. Today I will discuss how do we conserve the forest and the wildlife. The question here arises, why should we conserve the forest and wildlife? We should conserve the forest and wildlife to preserve the biodiversity, that means the variety of the different species, plant and animal, to protect the endangered wild animals becoming extinct and to maintain the natural eco balance. Why should we conserve? Deforestation, it leads to the danger for the wildlife. And the people easily poaching, that means hunting the animals and sell their organs in the market and earn money. So it disturbs the food chain and some other imbalances in our nature. What are the adverse effects of the deforestation? Already discussed in the previous class. So we need to conserve the plants, that is the forest and the wild animals. We should conserve the forest, that is the plants and animals, variety of species. In one word, we can say that we should conserve our biodiversity and to protect the wildlife, endangered wildlife becoming extinct, and to maintain the natural eco balance is called, it is the conservation of the forest and the wildlife. We should conserve the forest and wildlife. In word ones, we can say biodiversity. And to protect the endangered wild animals becoming extinct and to maintain the balance of ecological
system. हमें जो है क्यों कंजर्व करना चाहिए, इस पर जो है कल डिस्कस हुआ. तो वी शुड कंजर्व, इन वन सेंटेंस वी कैन से वी शुड कंजर्व द biodiversity and to protect the endangered wild animals becoming extinct and to maintain the balance of ecological system. How can we protect? We can by do the some activity, by imposing the people ban on the people to prevent them cutting the tree, hunting the wild animals. The first, how can we preserve? First, by imposing the ban on people to prevent them cutting the trees and poaching the wild animal. ठीक है, poaching the wild animal. Second, the government conserve or protect a large land, a large area of land in which the plants, variety of species like plant and animals varieties of species the government conserve or protect a large land area, है ना, in which the variety of species are found in natural habitat. ठीक है, इस तरह जो है हम जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं. थर्ड, to make the awareness among the people about the importance of
forest and wildlife. ठीक है, पहला तो बैन कर देना चाहिए लोगों को, ताकि वो पेड़ों की कटाई और जानवरों की जो शिकार करना बंद कर दे। दूसरा, गवर्नमेंट जो है कुछ एक खास पार्टिकुलर लैंड एरिया को एक्वायर करके प्रिजर्व कर दे, जिसमें वैरायटी ऑफ स्पेसीज जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं। तीसरा, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करके उन्हें यह बताकर कि फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल्स का क्या महत्व है, क्यों उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्लियर? इस तरीके से हम जो है वी कैन प्रिजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स। Next, there are 3 types of protected area which have been established by the government for the conservation of forests and animals. There are 3 types. There are 3 types. There are 3 types of protected areas. Established by the government to conserve the forest and the wild animals. Government to conserve the forest and wild animals. Clear? First क्या है? First is the biosphere reserve. Biosphere reserve. First is the biosphere reserve. Second is wildlife sanctuary. Second is wildlife sanctuary. Third one is national park. Third one is a national park. ठीक है, ये 3 हैं: बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क. We now discuss first on the first biosphere reserve. What is the biosphere reserve? Biosphere reserve is a large protected land area. Is a large land protected area. Clear? Biosphere reserve is a large land protected area for the conservation of wildlife, biodiversity, and the traditional lifestyle of the people who live nearby it. Biosphere reserve is a large protected area, just like the Panchmali. It maybe consists the wildlife sanctuary and national park.
इसके अंदर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है और नेशनल पार्क्स भी होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज ए लार्ज लैंड प्रोटेक्टेड एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व, it is a large, है ना, land it is a large land of it is a large area of land which is a large area of land which protected the biodiversity that means variety of species like plant and animals and the tribal lifestyle. It is a large area of land which protected the biodiversity, that means varieties of species, plants, animals, species में plants or animals, and the tribal lifestyle is known as the biosphere reserve. It may consist a wildlife sanctuary and a national park in this protected area. इसके अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, नेशनल पार्क भी हो सकता है. इज क्लियर? It provide the natural habitat for plants and animals. ठीक है, यह जो है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है. अब इसको हम देखें आगे. A biosphere reserve is divided into 3 zones. This is a biosphere reserve. Clear? It divides into the 3 zones.
दिस इज द इनर कोर जोन। इसे कहते हैं इनर है ना जोन और कोर जोन। इसे कहते हैं मिडिल जोन, मिडिल जोन या बफर जोन, बफर जोन। तीसरा है आउटर जोन, आउटर जोन। इट क्लियर? So it is divided into the थ्री जो है बायोस्फीयर रिजर्व, यह जो है 3 भागों में बटा हुआ है। पहला इनर मोस्ट जोन, ठीक है, जिसे कोर जोन भी कहते हैं। इनर मोस्ट जोन, जहां पर strictly the wildlife are protected, no human activities are allowed। यहां पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। यानी इस इनर जोन, इसमें जो है क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व is divided into 3 zones. First is inner और core zone, second middle और buffer zone, बफर जोन, थर्ड आउटर जोन। ये क्लियर? स्ट्रिक्टली इनर जोन में स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया फॉर वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स के लिए यह जो है कंप्लीटली स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया है। नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, नो ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड। कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं। अच्छी बात है। A strictly protected area. Inner zone is the strictly protected area for the wild animals. No human activity allowed. This is the buffer zone. Is clear? This is the buffer zone. In the buffer zone, a limited human activity for the research and other for the other research activities are allowed. This is the buffer zone, yani middle zone. In this zone only a limited human activities are allowed. Are allowed for research, environmental, education,
एजुकेशन etc। यानी इस इलाके में केवल जो है एक केवल जो लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड, इसमें जो है एक लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी जो है अलाउड है। आउटर जोन, जिसे आउटर मोस्ट जोन कहते हैं, दिस इज द आउटर जोन। इट क्लियर? दिस इज द आउटर जोन। आउटर जोन, यह है आपका आउटर जोन। इट क्लियर? यह है आपका आउटर। In the outer zone, only the tribals who are living near the biosphere reserve are allowed to enter into this area for cultivation, growing the crops, for establishing, for the various activities, because the livelihood of the tribals are depend on only in the outer zone, outermost zone. The outermost zone, that means the non-destructive human activity are allowed in outermost zone. In the outermost zone, in the outermost zone, the non-destructive human activity are allowed, such as कल्टीवेशन, खेती बाड़ी के लिए, ठीक है, कल्टीवेशन, सेटलमेंट्स ऑफ ट्राइबल्स, सेटलमेंट्स, settlement of tribals, growing crops system। इस इलाके में ये जो बफर जोन आउटर मोस्ट जोन है, इसमें केवल नॉन डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ किया जाता है, जैसे कल्टीवेशन, खेती बाड़ी करना, सेटलमेंट के लिए टेम्पोररी जो सेटलमेंट होती है ट्राइबल्स की, ग्रोइंग क्रॉप्स, है ना, फसल उगाने के लिए। the livelihood of most of the tribals are ऐसे लिखा, the most of the tribals are depend on outermost zone for their livelihood।
अपने जीवन यापन के लिए अधिकांश ट्राइबल जो है इसी आउटर मोस्ट जोन पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह कहें, आउटर मोस्ट जोन में ओनली द ट्राइबल्स आर अलाउड। ये इस आउटर मोस्ट जोन में केवल जो है ट्राइबल अलाउड होते हैं, जिसमें वे अपने खेती बाड़ी कहें या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कहें, ये जो है लेकर आते हैं बाजार में, अपना बेचते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं। Initially I have already said a biosphere reserve is protected area which may contain other some protected area like the wild sanctuary, national park. In our India, nearly the 14 biosphere reserve in our country, there are nearly 14 biosphere reserve. हमारे देश में लगभग जो है 14 बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद है, जैसे है ग्रेट निकोबार, काजीरंगा, सुंदरबन, पंचमढ़ी, ठीक है, ये सब कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व बहुत सारे हैं। जैसे एग्जाम्पल काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व। काजीरंगा कहाँ है? आपका जो है मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उसी तरह पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यह भी आपको मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, यह जो है आपको अंडमान निकोबार में पाया जाता है। कहाँ? अंडमान एंड निकोबार। उसी तरह है आपका सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, यह वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल। ये कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे काजीरंगा है, पंचमढ़ी है, ग्रेट निकोबार है, सुंदरबन है, ये जो है मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल में ये सब पाए जाते हैं। इस तरह जो है कुल 14 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, विच द लार्ज लैंड प्रोटेक्टेड एरिया। इन द नेक्स्ट session, I will discuss the difference between the wild sanctuary and the national park. Thanks.